कहाँ से लिखेंगे, स्क्रीन पूरा यूज कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट यूनिट 2। ओके, सो जब कभी भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो आपको बहुत ही अच्छे से एटलीस्ट यूनिट 2 का पूरा नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिट 2 बाय द वे? इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? Yes, I'll just try to connect the things in the mind mapping session, है ना। सब चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ छूट जाएगा तो उसको एंड में नोट करेंगे, ठीक है। सो यूनिट 2 के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा था? एनीबॉडी? आवर मेन कंसर्न इन यूनिट 2 वाज, वेरी गुड, वाइवा के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा मैं। व्हाट इज द टॉपिक दैट आई टॉट यू? इट इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ स्केलर फील्ड, राइट? Where it is, I don't think so. Okay, so it is differentiation of scalar field. So सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूंगा कि what is the scalar field, right? What is a scalar field? Scalar field क्या होता है? I'll just try to write what is a scalar field. ये scalar field क्या होता है? One more viva question. Yes, what is a scalar field then? A scalar field, नाम सुनते ही क्या लगता है? What is the meaning of a scalar field? Oh, very good. So it is any function from S which is subset of Rn to R. I purposely write S which is subset of Rn, not because my name start with S, because I wanted to talk about the open interval. What is the meaning of open interval, or more precisely an open set? Open set क्या होता है हर किसी को पता होना चाहिए. So anybody of you who will describe me the open set, audio on करके बता दो यार एक बार. Definition लिखने जाने पे टाइम लगेगा, इसलिए I just wanted someone of you turn on your audio and let me know what is the meaning of an open set. हाँ जी, यहाँ पे ये ओपन सेट होता है. ओपन सेट का मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए. So what is an open set? Basic question. Chat box is open, you can answer me there, otherwise you can turn on your audio as well. ठीक है, either of the way that you like you can go. Open ball is contained as size in, अच्छे से कुछ बताया नहीं यार, ऐसा नहीं कुछ तो अच्छे से. A set is said to be an open set if I consider any point inside the set that there should exist an open ball around that point such that that ball lies inside the set. For an example, suppose if I consider this is S, this is a point, there should exist a open ball containing inside S, right? Yes. S belongs to Rn. प्रणय जी ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बोल दिया आपने. S belongs to Rn doesn't mean that it is an open set. ओपन सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर का कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका नेबरहुड जो है वो उसी सेट के अंदर होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, दिस इज नॉट एन ओपन सेट बिकॉज सपोज इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके अराउंड अगर मैंने कोई भी ओपन बॉल बना, दिस ओपन बॉल इज नॉट कंटेन्ड इनसाइड द सेट S. But suppose if I consider the same set without a boundary, then it becomes an open set, right? So this is nothing but the basic funda that student should understand at the end of the unit, right? जैसे आपका कोर्स खत्म होता है ना, every time you learn any subject, at the end of every unit there is something that a teacher expects student should know. For an example, in this case scalar field क्या है स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए. उसके बाद अगर मैंने ओपन सेट बोला तो ओपन सेट क्या है, that is something that you should know, right? Then there comes the definition of interior point and etc etc. I leave it for the student to go deep inside the open set. I will come to the my part, that is nothing but a scalar field is given. When can I say the scalar field is continuous at a point? I want to talk about continuity of the scalar field. This field is continuous at A. How can I say this? अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट ए पे. ये कब हो सकता है? When it is possible. जल्दी जल्दी बोलेंगे. Yes, limit exists. Very good. The more precise I said that limit should exist at A. More precisely, I can write limit. I will try to write it a different way. I'll try to write like h bar tends to 0 bar f of a bar plus h bar is same as f of a bar.
Is it the same as the limit condition that you have learned in the 11th standard? Everybody, please verify with the Y in the chat box. अगर नहीं समझा तो I'll give you the older definition और compare करेंगे. क्या ये मुझे बताता है कि f is continuous at a bar? Please check. Yes. Okay. Yes. Okay. Fine. So why we are talking about continuity? We know that the continuity and differentiability has a good relation. So first of all, I said f is a scalar field which is continuous at the point A if and only if it satisfies this condition. Once we know it is continuous, we think about whether it is differentiable at a particular point or not. Now this is differentiable at the point A bar if there exists a linear transformation TA bar from Rn to R such that there also exists a error function which depends on two things, h bar and a bar, with the condition it is satisfying as f of a bar plus h bar minus f of a bar is equal to t a bar h bar plus the error function at a bar comma h bar, where this error function divided by norm of h bar should converge towards 0 bar. 0 bar लिखो ना, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? Will it be 0 bar? No, it should be just 0, right? It converges towards 0 when my h bar converges towards 0 bar. So this is nothing but the basic definition of differentiability of a scalar field. आज के बाद कभी भी ये सुनाई दे कि स्केलर फील्ड डिफरेंशिएबल है, यानी कि ये उसका बेसिक डेफिनेशन है. आप बोल सकते हो कि हाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट, बट बेसिक थिंग दैट आई विल रिक्वायर फ्रॉम यू ऑल इज नथिंग बट दिस डेफिनेशन. नाउ कम्स द कंडीशन. What is the relation between continuity and differentiability? Every continuous function at A is differentiability. True or false? Yeah, it is false. Very good, Pranay ji. अच्छे से सुनेंगे क्वेश्चन को. मैंने कहा क्या? Continuous implies differentiable. So that should be false, right? So everybody should know this relation कि continuous है तो differentiable होना जरूरी नहीं है. But if a function is differentiable at A, then it should be continuous at A. Differentiable at A implies continuous at A bar. Now, everybody of you should know which is an example that we have done in the class which tells me it is continuous but not differentiable at a particular point. ऐसा कोई example है आपके पास? ऐसा function दो which is continuous at a point but वो differentiable नहीं. Y upon mod of phi yes, x square plus y square. Very good. Mod of phi under root x square plus y square, right? Mod x. Oh, Mahek Kalaji, you are giving me an example mod x, but I will not accept this from you during examination. The only reason is now you are in SYBSc. The example that you gave me is an example from R to R. अब हम लोग scalar field का example चाहिए था मुझे, right? Your answer is correct, but it is out of our domain. अभी हमारा डोमेन क्या है कि मुझे स्केलर फील्ड पे काम करना है, तो इसीलिए आई विल एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए एग्जाम्पल, राइट? कैन एवरीबडी वेरीफाई mod x प्लस mod y is also continuous, but it is not differentiable at the point 0, 0, right? So these are nothing but the example which tells me that it is continuous at some point, but it is not differentiable, right? So everybody should remember this. What we have done till now, continuity क्या होता है, differentiability क्या होता है, उसके बारे में बात कर ली. Now once we say it is differentiable, then this t is called what? ये जो t था उसे क्या कहते हैं? किसी को याद है इसका नाम? This linear transformation is called total derivative. Very good. So it is called as a total derivative. ये total derivative के ऊपर हमने कोई theorem किया था क्या? Yes, any theorem that we have done about total derivative? Yes, that is about uniqueness. So, uniqueness of total derivative. What does this tell me, by the way?
ये मुझे ये कहता है कि फॉर एन एग्जांपल सपोज इफ आई हैव अ फंक्शन व्हिच इज डिफरेंशिएबल एट a bar and I tell you it has two total derivatives, then what you can conclude about those two total derivatives? I will repeat my question again. I'm telling you I have a function f which is differentiable at a bar with two total derivative at a bar. They must be equal. Yes, that is the meaning of uniqueness. I'm trying to convert the fundamental of uniqueness into a simple word. Everybody agrees to me what I said, the example that I told you. Uniqueness का मतलब क्या हो रहा है समझ रहा है? With an example. Yes, perfect. So once we know all this, we should know if I tell you total derivative is same as our derivative, then what we have done is nothing but the formula for the derivative. So suppose if I want to find out my total derivative of the function f at the point a bar in the direction of h bar, what is that formula? Net product of h bar, comma, gradient of f of x, comma 1. Perfect. Gradient of f at a bar. Right? So whenever you will write this formula to me, I will definitely ask, what is the meaning of the gradient? Suppose f is from Rn to R, then this gradient of f is from where to where? That would be my next question. Yes, my gradient of f is from where to where? Perfect. It should be from Rn to Rn. Right? Also, one of the wonderful things that everybody should know now, what does gradient represent? किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? Yes, gradient of a function at a point. What does it represent? हाँ जी, someone? Partial derivative with respect to x? Nayan, yes. Okay, so what I said is nothing but what you guys are telling me, the one who has answered me partial derivative, they are telling me how to find out the gradient. But my question was, what does it represent? अगर सपोज मैं स्केलर फील्ड लेता हूं, फॉर एन एग्जांपल आई कंसिडर अ स्केलर फील्ड फ्रॉम R2 to R and I plot it, it becomes a surface, and to that surface we have learned कि gradient जो होता है in that situation represent a normal to that surface at that particular point, right? So what we have learned, I'll just note over here, gradient of f at a bar represent normal to the surface at a bar, right? So this is nothing but the concept that I asked. Definitely both who has answered partial derivative, that means how we find out it. Oh, that is there definitely. Then we have done multiple example. Each type of example student has to do by their own. हर एक एग्जाम्पल जो क्लासरूम में कराया गया है, प्रैक्टिकल में कराया गया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स. Right, so this is about scalar field. I think few things are still remaining, so I just go through my notes. Examples मैं कोई भी एक भी particularly मैं discuss नहीं करने वाला हूँ, because that is something that you guys can do. What is the other thing that students should know is nothing but the properties of gradient. I just note it over here. Properties of gradient, that student should know well, right? Because gradient क्या है? How to find out gradient? What does gradient represent? What are the basic property of the gradient? These are something that we have discussed. So everything should be done well. Okay, then we have done so many proofs. इतने बड़े बड़े प्रूफ किए, बट आई डेफिनेटली नो आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने वो प्रूफ देखोगे, राइट? दैट इज फाइन, कोई बात नहीं है. बट नाउ वंस वी हैव द स्केलर फील्ड विद अस, the next important thing that we have discussed is nothing but mixed partial derivative, right? So I just come to the concept of mixed partial derivative. Okay, once I am done with writing everything, I'll let you know
आपको थोड़ा टाइम देता हूं, मुझे ढूंढ के देना अगर कुछ छूट जाता है तो. बट नाउ वी विल टॉक अबाउट मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव. हाँ जी. ओके, सो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में जैसे ये चीज सुनाई दे रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव? दैट मींस यू आर फाइंडिंग. हेलो, यस, कौन है ये? जरा उनको बोल दीजिए कि माइक टर्न ऑफ करे. अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं. कौन है? सर आप नोट कर सकते हो उसको. अच्छा, मैं कर सकता हूँ क्या? ओके 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 ओके, आई कैन म्यूट राइट. यस यस यस, हाँ हो गया. ओके, डन. सो वी कैन कंटिन्यू नाउ. हाँ, हम कहाँ थे? हम थे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की और हमने देखा था कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव? एक्स वाई एक्स में कुछ भी लाके लिख दूंगा, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट देम, है ना. प्रैक्टिकल हो या फिर वो एग्जामिनेशन, एवरीबॉडी ऑफ यू शुड नो गुड प्रैक्टिस ऑफ फाइंडिंग आउट द मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव. सो एग्जांपल्स हर किसी को करके जाना है अच्छे से, right? But most important things or the fundamental that we have done in mixed partial derivative is nothing but the equality of mixed partial derivative. यहाँ पर what is a sufficient condition? What is a sufficient condition to say my fxy is same as fyx? कब my fxy is same as xy? At suppose a bar. What is that condition? कब कहोगे कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होता है? हाँ जी, they should exist and they should be continuous, right? So my fxy and fyx should exist and continuous at or in the neighborhood of a bar. Continuous in neighborhood of a bar, right? This is there. And after that, whenever I see this sufficient condition, मुझे और एक चीज याद आ रही है. जब हम लोग ने स्केलर फील्ड की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की, वहां पर भी हमने देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है, यहां पर वी हैव सीन अ कंडीशन जहां पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है बट दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट? सो व्हाट इज अ sufficient condition for differentiability of scalar field? Sufficient condition for differentiability of scalar field. कोई भी स्केलर फील्ड डिफरेंशिएबल कब होगा? पार्शियल डेरिवेटिव जो है सेम, आई थिंक इट इज द सेम आंसर. द पार्शियल डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट एंड दैट शुड बी कंटिन्यूअस इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. सो आई राइट PD should exist and continuous in neighborhood of that point A bar suppose, right? So partial derivative exist करता है तो आप gradient निकाल सकते हैं. Gradient निकाला, that doesn't mean कि आप उसका total derivative मिल जाएगा, right? Why it doesn't happen? Because from all the direction the derivative should be same. Then only we say the total derivative or simply derivative exists, right? So what is the condition? The condition is partial derivative should exist. With that, they must be continuous at that point A bar, right? Once we have done this all, after this I think क्या रह जाता है? I think chain rule, right? Chain rule. Chain rule के बारे में बात करेंगे. How to calculate a chain rule? Suppose तो chain rule के बारे में बात करेंगे. Chain rule क्या है? Chain rule. What is the chain rule? Right? So suppose if I have a function f from S which is subset of Rn to R, I have gamma which is I will consider from R to Rn, or I will say S which is subset of Rn. Then my gamma composite f is from where to where? कहां से कहां? Please फटाफट से, is from where to where? Anybody? Yes, it is from S to R. Very good, Sahil. जागते रहेंगे. But the correct answer is from R to R. Right?
So suppose if I tell you this is nothing but G, then my G dash at T would be same as inner product of gradient of F at gamma of T times यानी कि inner product with gamma dash of T. Right, so this is nothing but the formula that we have discussed multiple times. What I request you all is remember the formula well and the solution of the problems, यानी कि problems भी कैसे solve करना, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. Right, we have done the proof of the theorem, but looking at the type of the exam that you're going to give, proofs को skip कर सकता, right? So proof नहीं देखेंगे, but इस example, इसके ऊपर जितने भी example किए अच्छे से पढ़ के जाना है हर किसी को. उसके बाद हम लोग बात करेंगे चेन रूल होने के बाद तुरंत ही. वंस वी हैव दिस चेन रूल इन आवर हैंड, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न इज नथिंग बट हाउ टू फाइंड आउट द टेंजेंट प्लेन. सपोज आई विल टॉक अबाउट टेंजेंट प्लेन नाउ. Tangent plane. So what we have done is tangent plane, यानी कि suppose if I give you an equation from f is from r n to r, yes, r n to r into r, then tangent of f at yes, anybody said anything? No. So tangent of f at a bar is given by the equation. Equation एक बार मुझे याद करा दो ना chat box में. Tangent of f at a bar is given by, what is that equation to find out the tangent? Tangent formula कैसे निकाला जाता है tangent? I want to find out the tangent plane of f at a bar. हाँ जी, anybody? चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है यार, टेंजेंट तो पता होना चाहिए. Yes. It is inner product of gradient and distance between that point x minus Perfect, perfect. So it is x. Okay. So the way she said is perfect. But धीरे धीरे अपने आप को improve करेंगे. Distance में बोलेंगे, ठीक है? Next time x bar minus a bar. ठीक है? It is not a distance, but very good. You remember the formula. That is something important. So what I see when I, because आप जितना याद नहीं रख सकते उससे कम चीजें मैं याद रख सकता हूँ. So whenever I see something, I try to connect it with the concept that I have learned. So how do I remember is कि मैं क्या करता हूँ कि I'll just try to see the concept. What is the concept? I know the gradient is nothing but the perpendicular या फिर normal to the surface. अगर मुझे tangent चाहिए, tangent plane, then suppose if x bar is over here, any point over here, this is my a bar, this normal is nothing but gradient of f at a bar. Then this x bar minus a bar is now not the distance, but it would be this vector, right? So this is how we think. So whenever this is perpendicular, that means this x bar would lie on the tangent plane, hence the tangent equation is given by this form, right? So this is nothing but the formula that everybody should remember for your viva or your examination, practical examination. उसके साथ साथ इसके ऊपर अगर कोई सम आता है तो भी आपको वो सॉल्व करने आना चाहिए. बेसिक टाइप के सम आपको एग्जामिनेशन में भी मिल सकता है, राइट? सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द सम वेरी क्विकली, है ना? अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो फ्यू सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है? तो अगर पेपर लेंथी लग रहा है, दैट मींस यू हैव टू डू समथिंग टू डू. प्रैक्टिस ज्यादा करना है. जितने भी क्वेश्चंस क्लासरूम में किए हैं उसको प्रैक्टिस करो. आई विल मेक श्योर कि लेंथी क्वेश्चंस ना पूछे जाए एग्जाम में फ्रॉम माय साइड, राइट? बट क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे. यू शुड हैव प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट इज डन इन द क्लास, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे. इसके बाद हम लोग ने और भी बहुत सारी कंडीशंस देखी थी. आई थिंक द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज नथिंग बट द वन ऑफ द नेम थ्योरम. ऑयलर नाम था शायद, राइट? ऑयलर्स theorem. What was the name? Euler's theorem. Euler's theorem. क्या था वो Euler's theorem? It was about Euler's theorem for homogeneous scalar field, homogeneous differentiable scalar field of degree p. Homogeneous scalar field of degree p.
What is the meaning of a homogeneous scalar field of degree p? और एक कंडीशन था कि वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए. What is the meaning of a homogeneous scalar field? चलो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ODE और मेरे दोनों में मिलता है. So what is the meaning of a homogeneous scalar field? Basic सा क्वेश्चन. हाँ जी, anybody? Sir, when the function is defined from Rn to R, then my f of t of x should be equal to t raised to the power p, which should be the degree, and f of x into Perfect. when all my x should belong to S. That is the domain. Perfect. So this is something that we have learned. Why we are so much interested? When you go ahead in the mathematics, you will see some type of a function which satisfies some special condition. They behave in a special pattern. So यही statement के अंदर मैंने बहुत बार special word को use कर लिया. But since they satisfy a particular condition, उनका behavior जो है वो कुछ स्पेशल बन जाता है और उनको स्टडी किया जाता है एनी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट ओनली इन कैलकुलस, ऑल्सो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आप उसको स्टडी करते हो, राइट. सो सपोज इफ आई हैव अ डिफरेंशिएबल होमोजेनियस स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री p, then what we have learned is we have learned that gradient of f at the point x bar, the inner product with x bar is same as, this inner product is same as p times what I should write, f of x bar, right? स्टेटमेंट सही है, yes or no? एक बार हर कोई वेरीफाई करेगा. Yeah, okay, perfect. So everybody of you should know what is this Euler's theorem. उसके साथ साथ इसको कैसे अप्लाई करना है, that is something that I expect students should know at the end of the semester. ठीक है, आप आगे जाके कुछ भी लो, लेकिन इस सेमेस्टर में अगर मार्क्स चाहिए तो यू शुड नो व्हाट इज द स्केलर फील्ड, व्हाट इज द वेक्टर फील्ड, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, रिलेशन क्या है कंटिन्यूटी के साथ. ये बेसिक सी चीजें जो हर किसी को पता होनी चाहिए, राइट. एंड आफ्टर दिस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू, क्या कुछ यूनिट 2 में से छूट जा रहा है क्या, राइट. जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू योर नोट्स एंड लेट मी नो अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है फ्रॉम यूनिट नंबर 2. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि कुछ छोटा. So I'll just scroll it up. If you see anything is left, do let me know. Like just go through the things once. Mean value theorem. I don't think so. That is something that I have done. Right. Ashwini ji. चलो बाकी लोग मुझे बता दो भाई, मीन वैल्यू थ्योरम यूनिट 1 में है कि यूनिट 2 में है. अश्विनी इज राइट. मैंने मीन वैल्यू थ्योरम नहीं कराया था. I think I just have given the statement, but it was a part of unit number 1 because unit number 1 में आप mean value theorem पढ़ते हो. मैंने सिर्फ उसका यूज करना था तो इसलिए मैंने कहा था. LC is nothing but level set, right? What is the definition of a level set? हाँ नयन जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ उसका यूज किया था, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम का. But that should be considered as a part of unit number 1. If you go through the portion यार, at the end of the semester एक बार portion तो देखो कि सर ने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, है ना. तो लेवल सेट के बारे में भी एक बार देख लेते कि भाई लेवल सेट क्या होता है. Yes sir. Okay, what is a level set? Level set. What is the level set? So whenever, suppose if I have a function from I say R2 to R या फिर Rn, R क्या लिखूं यहाँ पे, R3, all that function, letter R3. Okay, so I'll talk about Rn, level surface, level set and level curve, right? So everybody should know. Suppose I go for level set, then the function is from Rn to R. Then my LC is said to be a level set if it is nothing but collection of all those points. I will say x bar, collection of all those x bar such that my f of x bar is constant. Is a constant. So this is nothing but the level set. Then student should know what is the level surface. Surface यानी कि हमारा function is from R3 to R, and then we have a level curve. Curve यानी कि it is from R2 to R. Right, so these are nothing but the two next questions that might arise, right? Anything else that is left, just go through it.
और मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट पढ़ के जाना अच्छे से, है ना। बट यूनिट नंबर 1 में तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट तो वो भी है, मीन वैल्यू थ्योरम हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट वंस, अगर कुछ छूट जाता है तो प्लीज मुझे बताइए यूनिट नंबर 2 से। See the things that we have done. See the slide, all covered. So I think we can go for the next unit, that is nothing but unit number 3. And in unit number 3 we have two kind of thing that we study. The first thing that we concentrated initially was vector field, and then we move again to scalar field. But while talking about scalar field, this time we started talking about the maxima minima, that is nothing but optimal city of it. With that, we talk about the Taylor series in that case, Taylor's polynomial, Taylor's degree, and at the end, we our portion by talking about Legendre's equation, right? So we will talk about it now, unit number 3. Unit 3. That is nothing but differentiability of vector field, and I can say application of differentiability on scalar field. This is something that we have covered in this unit number 3. So unit number 3, सबसे पहला question, basic सा question, what is the meaning of a vector field, right? Vector field क्या होता है भाई? Vector field बहुत ही simple सा question है. My vector field, that means my function f, small f I write, is from S, which is subset of Rn, but this time my codomain is also vector, so it is Rn to Rm. Then what are the things that we have learned? We know how, when it is differentiable, when it is continuous, this f is continuous at a bar. You should do what I should write over here. This f is differentiable at a bar. This is differentiable at a bar. We have the similar kind of a condition. The condition is there should exist a t such that same, everything is same, that my f of a bar plus h bar minus f of a bar is equal to my t a at h bar plus the error function a bar h bar, where this my error function a bar h bar divided by norm of h bar should converge towards 0 bar whenever my h bar converge towards 0, right? यहाँ पे same condition लिखेंगे continuity के लिए. The condition was my limit x bar tends to a bar, f of x bar is same as a bar. क्या ये भी continuity का ही condition है? Yes or no? Can I say if a function satisfies this, then it is continuous at that point? हाँ जी कि ना जी? Yes, it is. It is the same condition. दो बार हमने अलग अलग तरीके से लिखा. Then we here, what we found is this linear transformation was written in terms of a matrix. So सबसे important question आपके लिए यही हो जाएगा कि जैसे ही कोई एक वेक्टर फील्ड दिया है ना, हम लोग क्या पढ़े, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ वेक्टर फील्ड, देन एवरी वन ऑफ यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट अ डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फील्ड. So यहाँ पे डेरिवेटिव था, that was nothing but the linear transformation. This linear transformation T a bar, if I write in the form of a matrix, then what would be the dimension of that matrix first of all? Yes, what would be the dimension of that matrix? See, my scalar field is from Rn. Yes, okay. Oh, perfect. So it is m cross n. I think I'm getting some call. I just got it later on. पता नहीं कौन है. It is m cross n. Okay. It is m cross n. Now, how I will find out the element of this matrix? Yes, so it would be m cross m. So उसके अंदर कितने रोज होंगे? m रोज होंगे. And I have m function over here. तो फर्स्ट रो जो होगा वो पूरा का पूरा f1 से बना होगा. सेकेंड रो जो होगा that would be made up from f2 and so on
it would be fm. So first row पूरा f1 dot 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 f1 dot 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 f2 dot 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 fn, right? और उसके बाद फर्स्ट कॉलम जो होगा, in the first column we will take the derivative with respect to the first variable. In the first column पूरा we take the derivative with respect to the first column. Second column के अंदर with respect to the second variable we take the derivative. In the last case we take derivative with respect to the last variable that I have, that is nth variable. Right? So whenever I write this, that means I am taking derivative with respect to the particular variable. So इस तरीके से बनता है हमारा ये मैट्रिक्स, right? This matrix को कुछ नाम दिया था क्या हमने? What was the name of this matrix? Jacobian. Yes, this is called as a Jacobian. This is called as a Jacobian matrix. Okay. So after knowing about this Jacobian matrix, जैसे ही आपको ये Jacobian matrix का फंडामेंटल पता चल गया, नेक्स्ट चीज जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट Jacobian for any matrix. So what you have to cover is nothing but examples, है ना? जितने एग्जाम्पल्स किए हैं वो अच्छे से करके जाओ. सेम एग्जाम्पल आए ना आए, बट आपको जो भी आए वो आपको सॉल्व करने को आना चाहिए. ठीक है. सो हाउ टू फाइंड आउट Jacobian फॉर अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव फॉर अ वेक्टर फील्ड, दैट यू शुड नो. जैसे कि हमारे पास वहां पे था, वैसे हमारे पास यहाँ पर भी है. डिफरेंशिएबल एट ए बार, देन दैट वेक्टर फील्ड वुड बी कंटिन्यूअस एट ए बार. यहाँ पे हमने कन्वर्स एग्जाम्पल नहीं किया था, but definitely converse is not always true, right? We have learned about Jacobian, how to find out Jacobian. Then comes an important thing, that is the thing but chain rule for vector field. Chain rule, right? So we learn about the chain rule. Chain rule क्या कहता था? So this Jacobian is actually denoted by D. तो chain rule के अंदर हम लोग क्या करते हैं? Suppose if I want to find out the derivative of f composite G at x bar, I want to find out the derivative of f composite G at x bar. Then that is same as finding out the derivative of f at G of x bar, and whatever is this matrix should be multiplied with derivative of G at x bar. Right? So this is nothing but something that we have already done, but students should know how to apply this actually. मतलब वो matrix find out करके multiply करके, you should know how to verify it, right? So statement तो चाहिए हमें इस examination के लिए. Example हमने बहुत ही सारे solve किए, एक बार अच्छे से practice करेंगे. And after this हम लोग ने vector field का साथ छोड़ दिया था. हम लोग ने वेक्टर फील्ड में क्या क्या किया था कि वो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, ये टोटल डेरिवेटिव है वो कब एग्जिस्ट करता है, कैसे ढूंढना है, डिफरेंशिएबल अप्लाई कंटिन्यूअस, और चेन रूल इन वेक्टर फील्ड. इतनी सारी चीजें थी जो हमने वेक्टर फील्ड में कवर की. उसके बाद हम लोग आ गए थे स्केलर फील्ड के ऊपर. सो इन स्केलर फील्ड वी हैव टॉक अबाउट हेसियन मैट्रिक्स. This Hessian matrix for a scalar field f from Rn to R, what would be the dimension of the Hessian matrix for f? Dimension क्या होगा इसका? Welcome Shakshi, on time always. What is the dimension of this? Very good, it is n cross n, right? Once you know the dimension, you should know how to calculate it. बहुत ही सिंपल सा था. अगर if I have f from Rn to R, then how we find out? It is nothing but f11 का मतलब derivative with respect to the first variable, फिर again with respect to the first variable, f12 f13 dot 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 f1n. Then in the second f21 dot 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 f2n. At the end we have fn1 से लेके fnn. So this is nothing but the n cross n matrix. While defining our Hessian matrix, हम लोग ये assume करते हैं कि all partial derivative exist and are continuous, right? Hence this Hessian matrix is always what?
is always, this Hessian matrix is always dash matrix. Symmetric square. perfect symmetric square symmetric या फिर symmetric. अदरवाइज साइल अगर मैंने अगर साइल आई थिंक आंसर, अगर सपोज मैंने बोला स्क्वायर नहीं है, क्या कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? Can I say I have a non-square matrix? For an example, this 2 cross 3. Can this ever be symmetric? क्या ये मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक हो सकता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा. यस, हाँ जी, एनीबडी? क्या अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास, नो इट कैन नॉट बी, इट नेवर बी, बिकॉज अगर ट्रांसपोज लेगोगे 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, राइट? सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ऑल्सो व्हेन वी लर्न दिस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट गेट ओपन्स टू मी. जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई हेजन मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, यू विल टेल मी द डेफिनेशन. देन व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई शुड आस्क? स्केलर फील्ड से क्या निकलता है? हाउ, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अ स्केलर फील्ड एंड अ वेक्टर फील्ड? एक स्केलर फील्ड से वेक्टर फील्ड कैसे बनाते हो? यस, एक स्केलर फील्ड है, उस स्केलर फील्ड से कनेक्टेड एक वेक्टर फील्ड होता है. कैसे बनता है? अगर सपोज उस स्केलर फील्ड का मैंने ग्रेडियंट ले लिया है ना, इफ आई कंसीडर द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड, अगर सपोज मेरे पास f एक स्केलर फील्ड था, देन द ग्रेडियंट ऑफ f इज फ्रॉम Rn to R. देन हेसियन फॉर दिस वेक्टर फील्ड कैसे निकालेंगे? हाउ विल फाइंड आउट हेसियन फॉर दिस वेक्टर फील्ड? कैसे निकालते हैं हेसियन फॉर द वेक्टर फील्ड? हाँ जी, एनीबडी? क्या किसी वेक्टर फील्ड के लिए हेसियन निकलता है? यस और नो? हेसियन किसके लिए डिफाइन किया गया था? स्केलर फील्ड के लिए. ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज थे, तो मैं स्टूडेंट को चाहता हूं कि वो ऑब्जर्व करना सीखे कि कौन सी चीज किसके लिए डिफाइंड हुए. तो सपोज अगर हेसियन मैट्रिक्स डिफाइन नहीं हुआ, बट आई कैन फाइंड आउट द जैकोबियन फॉर दिस स्केलर वेक्टर फील्ड एंड दैट इज सेम एज हेसियन फॉर द स्केलर फील्ड. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा एट द एंड इज ट्रू और फॉल्स? एट द एंड मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बिकॉज ये चार चीजों को कनेक्ट करता है एक ही साथ. क्या है? उसके अंदर स्केलर फील्ड है, उसके अंदर वेक्टर फील्ड है, उसके अंदर हेसियन मैट्रिक्स आ गया, उसके अंदर जैकोबियन आ गया, राइट? सो दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, right? Once we have discussed about the Hessian matrix, you should know how to find out Hessian matrix. अगर मैंने आपको कोई भी स्केलर फील्ड दिया, हेसियन आपको आंख बंद करके निकालने को आना चाहिए, वो हो गया. अगर मैंने वेक्टर फील्ड दिया तो आपको जैकोबियन निकालने को आना चाहिए. अगर ये दोनों आ गया तो दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए. ठीक है, एंड वंस वी हैव डन विद ऑल दिस, हेसियन का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमने किया था, दैट इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द ऑप्टिमलिटी, यानी कि हमारे पास जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो कैसे मिलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if I tell you my gradient of f at a bar is equal to 0. Now here I am talking about the scalar field, so it is from Rn to R. What does this mean? इसका मतलब क्या होगा? If I tell you gradient of f at a bar is 0 bar, I should write 0 bar because it is a vector field. What does this mean? अगर मैं कहता हूं gradient of f at a bar is 0 bar, that means a is the constant. Very bad, very bad, very bad. यार ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. अरे रे, अरे रे, अरे रे. ठीक है, I'll just tell you one of the a is a constant. महक, both are thinking like कि सर अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट आया दैट मींस वो कांस्टेंट होता है, मतलब डेरिवेटिव 0 है तो आंसर कांस्टेंट होता है. ऐसा नहीं होता है. व्हाट आई एम आस्किंग, उसको थोड़ा मैं इजी करने की कोशिश करता हूँ. सपोज इफ आई टेल यू माय f of x is equal to x x क्या लिखूं मैं यहाँ पे?
Okay, I'll write it at 2x plus 1. Suppose if I write it like 2x plus 1. Now my f dash तो नहीं, but f dash at नहीं, but f dash. अच्छा मैं 2x square लिख दूँ. Yes, 2x square. Okay, f dash at minus 1 by 4. What is the answer? What is my answer? F dash at minus 1 by 4. -1. Are you sure? Are you sure? Check करो एक बार. It is 0 यार. It is 0. Yes, it is 0. So the same thing I have asked. You see, whatever we have learned earlier, मैं same चीज आपको यहाँ पर पूछ रहा हूँ, है ना. मैंने यहाँ पे अगर suppose you get this equal to 0, what does it mean to you? If I tell you f dash at minus 1 by 4 is 0, what does it mean? Does it mean my function is constant? नहीं ना, function थोड़ी constant है. तो फिर यहां पर आपने कैसे बोल दिया कि वो कांस्टेंट है? यहां पर ये -1/4 एक स्पेशल पॉइंट बन जाता है ना. क्या कहते हैं ऐसे पॉइंट को हम लोग? यस. सो ये था जो मैं आपको चाहता था कि आप इसके बारे में सोचे. दैट मींस व्हेनेवर दिस इज इक्वल टू 0, दैट मींस माय a bar is nothing but the critical point. Now this critical point has been divided into 3 parts. चलो जल्दी जल्दी नाम बता दो. स्केलर फील्ड के अंदर क्रिटिकल पॉइंट को 3 नाम दिए गए. कौन कौन से है वो? Yes, very good. Maxima, minima, and the maxima, minima, and yes, saddle is something that I want everybody to remember. Minima and saddle. I assume that हर एक स्टूडेंट को इन तीनों के बारे में पता है. Maxima means it is a maximum point of my graph. Minima means it is a minimum point. But what is about saddle? Saddle means it's like this. एक साइड से वो इंक्रीज हो रहा है, एक साइड से वो डिक्रीज हो रहा है. That means that point is neither my maxima nor my minimum. But what is interesting thing about that point is, so अगर सपोज मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना. मैंने जो भी ड्रॉ किया है वो आई थिंक आपको समझ जाएगा. कुछ तो ऐसा ऐसा सा है. So it is like this. Okay. It is like this. Okay, this is nothing but the saddle kind of a situation. हॉर्स के ऊपर जो बैठने का सीट होगा ना, that is nothing but the best example of saddle. अब इस पॉइंट को यहां पर ये जो पॉइंट है, that becomes a critical point. Why? Because at this point my tangent plane, this is nothing but the tangent plane, this would be perpendicular to my xy plane. So critical point is the point at which a tangent plane is parallel to xy axis. Right? So with this I have covered lots of things कि भाई क्रिटिकल पॉइंट कब होता है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, कितने टाइप के क्रिटिकल पॉइंट है स्केलर फील्ड के. राइट? इज इट ओके? हर किसी को ये समझा कॉन्सेप्ट? एक्चुअली समझा तो है ही ऑलरेडी, बट आई फेल्ट कि एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए था इसको. कैन वी मूव अहेड? इज इट फाइन? ओके. सो नाउ वी गो फॉर द इंपॉर्टेंट थिंग. वंस वी नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द scale critical points, we should know the test. What was a test? If I have f is from s, which is subset of r2 to r, right, and then my a is a point inside this. A bar is critical point. critical point का मतलब क्या होता है कि that means my gradient of f at a bar should be same as 0 bar. So a bar is such a point such that gradient at that point is 0 bar. Then we have three things. First of all, I give the naming to the things. My determinant of the Hessian of f at a bar is denoted by the delta, and a is nothing but the first coordinate in this matrix. First coordinate क्या होता है? So it is f x x at a bar. Hessian क्या होगा? Hessian matrix is nothing but f x x at a bar, f x y at a bar, f y x at a bar, and at the end f y y at a bar. Right? So इसके अंदर
ये जो फर्स्ट एंट्री होता है उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल एफ, राइट? जस्ट अ नोटेशन, आई कुड हैव रोट एफ एफ एक्स, बट सिंपल करने के लिए जस्ट नोटेशन दे दिया है कैपिटल। नाउ इफ my delta, that is the determinant, if the determinant is less than 0, then a is what? This a bar is what? That's very good, it is saddle point. Now अगर less than 0 है तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, but suppose if it is greater than 0, if my this delta is greater than 0, it is greater than 0, then what happens? Then we go to check a, suppose, and this a is also greater than 0, capital A, then a bar is minima. And the last thing that we have noted is, if my a is greater than 0, sorry, my delta is greater than 0 and a is less than 0, then my a bar is maxima. Perfect. And the fourth condition is, suppose if I get determinant itself equal to 0, then the test has no conclusion. Right? With the test, we cannot conclude anything about that point. That is the critical point, but it is unable to tell us whether it is saddle minima or maxima. Right? So this is nothing but the derivative test that we have learned. You should know all the names, you should know the statement well, you should know all the condition well. At the end, if some question has been asked to you in the practical, you should be able to solve that as well. Right? So this is about this test that we have done. ये टेस्ट के ऊपर अच्छे खासे एग्जाम्पल किए थे. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितनी भी चीजें की है, जितने हो सकता है उतना आपको प्रैक्टिस करना है. एंड आफ्टर दैट वी केम टू द टेलर सीरीज. आई थिंक इसके बाद हम लोग ने टेलर सीरीज के बारे में बात की थी. वी हैव डन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑन दिस. सो व्हेनेवर we have done an example, you are supposed to do everything that we have done in the class, but more precisely example solve करके जाएंगे इसके लिए. ठीक है. Now we come to the Taylor series. Taylor series for a scalar field. राइट. तो सबसे बढ़िया चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट अ टेलर सीरीज, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. राइट. सो वी राइट द टेलर सीरीज फॉर्मूला. Taylor series formula. What is that formula? Suppose if I have a scalar field f from somewhere to somewhere, but that scalar field has a continuous partial derivative of order n, right? Then f is a scalar field from somewhere to somewhere, it has a continuous partial derivative of order n. So this is a scalar field, of continuous with continuous partial derivative of order n at some point, say a bar. Then what we know is I can write my f of a plus h comma b plus k. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ R2 से R वाला सिचुएशन, that because that is easy actually, we can talk about it, right? Yes, we can talk about it. Then this is actually same as f of a comma b plus d f a comma b plus 1 by 2 factorial d f square at a comma d and dot 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 till 1 by n minus 1 factorial. What I'm doing, I'm just writing the formula. Once I write the formula, we'll just describe it once कि कौन सी चीजें क्या है. Plus at the end there is nothing but the remainder term. That remainder we can denote it by, I think, theta लिख देंगे. This remainder is nothing but 1 by n factorial dn f at, I think in few of the reference book they use some other stuff, but we use a plus theta h comma b plus theta k, where this theta lies between 0 to 1. Right? So this is something that we have noted the formula. ये अच्छा खासा फॉर्मूला है, तो स्टूडेंट्स को अच्छे से याद होना चाहिए. हम लोग ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे खासे एग्जाम्पल किए थे. वो एग्जाम्पल एक बार करना है हर किसी को कि हाउ टू कैलकुलेट टेलर्स पॉलिनोमियल.
टेलर्स पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब कि आपको ये जो चीज है वही करना है, बट ओनली टिल दिस मच पार्ट। वो हियर दिस डी इज नथिंग बट h टाइम्स derivative with respect to x plus k times derivative with respect to y, right? So this is something that students should know. What is a Taylor series, what is its statement, why it is used. So Taylor series is used to convert given any function to the polynomial form. हम लोग ने इसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए थे, जैसे कि गिवन अ क्वेश्चन फाइंड आउट अ टेलर्स पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, या फिर सेकेंड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जहां पे हमने बोला था फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ x माइनस ए वाई माइनस बी। सो वहां पर भी हम लोग टेलर सीरीज को यूज कर सकते हैं, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल फॉर द एग्जांपल। सर एग्जाम में कितनी डिग्री तक क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक डिग्री 2 एंड डिग्री 3? नो, इट वुड बी ओनली एंड ओनली टिल डिग्री 2, उसके ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। In SYBSc we just go till degree 2. Okay, so degree 2 is maximum. Also I will not ask you to find out Taylor series, I will ask you to find out Taylor's polynomial of degree 2, है ना? I will be more precise while asking. I will definitely ask you कि भाई पूरा क्यों निकालना है, उससे अच्छा डिग्री 2 का ही निकालो। अच्छा डिग्री 2 तक ही आ सकता है, आएगा कि नहीं पता नहीं, बट डिग्री 2 तक सबको आना चाहिए निकालने को। इफ अ क्वेश्चन हैज बीन गिवन यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट टेलर्स पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, है ना? अच्छे खासे हम लोग ने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, वो सारे एग्जाम्पल हर कोई एक बार प्रैक्टिस करेगा। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स, राइट? इट इज डिफिकल्ट टॉपिक इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट वेल, है ना? मैथमेटिक्स से हर बार डरते रहोगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द थिंग्स, चीजें इजी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग ने लास्ट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्लासरूम के अंदर, दैट इज नथिंग बट लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड। सो पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक होगा कि भाई ये मेथड क्यों यूज किया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड? एनीबॉडी? Yes, what is the use of this method? Why we need this method? I'll give you some time. सोच के बताओ। Yes, very good प्रणय। To find out the extreme value. प्रणय, अगर सपोज सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सट्रीम वैल्यू निकालना था तो ऊपर भी जो भी हमने किया वो भी तो एक्सट्रीम वैल्यू ही दे रहा है ना। ये टेस्ट जो था वो भी तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए ही था इसमें। और हम लोग ने जो अभी अभी पढ़ रहे हैं लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड, फर्क क्या है? हाफ आंसर इज करेक्ट, बट देयर इज समथिंग मोर। We find out the extreme value of the function with respect to, चलो कंटिन्यू करो आंसर को, with respect to what? Constraints. Yes, we have given some constraint. ये जब मुझे ये लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड नाम सुनाई देता है ना, सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक होता है कि भाई दिस इज समथिंग सेम एज एन एलपीपी। एलपीपी में जो आप करते हो ये उसी के जैसा है कि आप अपने फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो बट विथ रिस्पेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। सो इन दिस वी सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक फाइंड आउट द ऑप्टिमाइज द फंक्शन एफ ऑफ z bar is equal to 0 bar subject to some constraint. Over here suppose I assume my function is from Rn to R. I have some m constraint g1 x bar. यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि all of them should be 0. It is a scalar field, तो 0 बार नहीं लिखूंगा, 0. Then I have some constraint g2, दूसरा कोई तो constraint है, dot dot dot. I have another constraints as well. Now this all the constraint are given with respect to this constraint. हम लोग वो सारे points को ढूंढते हैं तो वो बन जाता है फिजिबल रीजन। उस फिजिबल रीजन के अंदर हम लोग हमारे फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे हमें लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड मदद करता है। लेकिन ये जो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड है उसको यूज करने के लिए वो हियर द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे जो नंबर ऑफ
कंस्ट्रेंट है दैट शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल। उसके साथ साथ हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व इट। सो गिवन दिस एज द क्वेश्चन, आपके पास एक स्केलर फील्ड है, आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट है विच आर इक्वेटेड टू 0, देन हाउ यू सॉल्व। इसके जो भी ऑप्टिमल पॉइंट्स होंगे, all the optimum point of f यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट जो है which satisfy the constraint, which satisfy the constraints also, or will satisfy, I'll just be more precise, will satisfy a condition. What is that condition? Condition is my gradient of f should be same as lambda 1 gradient at g1 plus lambda 2 gradient at g2 plus dot 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 plus lambda m gradient at gm, है ना। तो हम लोग क्या पता चला कि वो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हेंस ये इक्वेशन है लैम्बडा वाला, वो लैम्बडा वाला इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट बन जाते हैं हमारे एक्सट्रीम पॉइंट, और उस एक्सट्रीम पॉइंट को यूज करके हम लोग ऑप्टिमम पॉइंट निकालते हैं। जैसे कि एलपीपी में भी क्या होता था, हम लोग फिजिबल रीजन ढूंढते थे, है ना। फिजिबल रीजन के लिए मिलने के बाद हम लोग उसके बाउंड्री पॉइंट्स को लेते थे, राइट। सो वी गेट द बाउंड्री पॉइंट्स। तो समथिंग सिमिलर हैपेंस ओवर हियर। ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। नाउ इस बाउंड्री पॉइंट में से कुछ होंगे जो हमें मैक्सिमम देंगे, कुछ होंगे जो हमें मिनिमम देंगे। सो वी सब्स्टिट्यूट दैट पॉइंट इनसाइड द फंक्शन, जहां पे मैक्सिमम मिला दैट बिकम्स अ मैक्सिमम, जहां पे मिनिमम मिला दैट बिकम्स अ मिनिमम, right? So that is something that we have learned. An important thing that students should know, why we use this method, what is the condition. The condition is my m should be less than n. Also how we do it, then we solve this last equation, that Lagrange's equation जो है lambda वाला, that equation we find out where this lambda 1 to lambda m are called Lagrange's multiplier. These are nothing but the scalars which we need to find out, right? जैसे हमें स्केलर्स मिलते हैं या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि स्केलर ढूंढे बिना भी वी कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमम पॉइंट, बिकॉज हमें इंटरेस्ट किस में है, वी जस्ट वांट द पॉइंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन। तो अगर लैम्बडा नहीं मिला स्टिल इट इज फाइन। सो इसके बाद मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेग्रांजेस मल्टीप्लायर के, वो सारे के सारे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। हम लोग ने इसके ऊपर आई थिंक 2 या 3 टाइप के प्रॉब्लम किए थे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम वंस, अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है स्टिल यू शुड बी एबल टू डू, है ना। और इसके बाद आई थिंक यूनिट 2 में कुछ बचता नहीं है ना। आई डोंट फील कि कुछ बचता है। स्टिल आई जस्ट यूनिट 3 में कुछ बचा नहीं है, बिकॉज यूनिट 3 इज नॉट अ बिग टॉपिक, छोटा सा ही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को वेक्टर फील्ड के बारे में बात करते हैं, जैकोबियन है, चेन रूल है, उसके एप्लीकेशन